Good evening, friends. Thank you for joining me for every session, every evening, to know what's happening here in India and abroad. Thank you for sending me your useful comments and suggestions. If you believe in this channel, do share it with your friends and spread the message. Our only mission is to bring you the truth at both sides of the story, and thank you for your support. Today we have with us Rabiya Khan. Welcome. Thank you, Minaji, for inviting. Yes. And yeah, thank you so much. Rabiya ji, see, there has been a lot of discrepancies in the Jiah Khan case because there were many powerful people trying to hush the truth. They never expected the power of a mother who tenaciously followed up on the case and brought enough evidence from her side to prove that it was not a suicide but a murder. So first what I'll do is, Rabiya ji, I'd just like to show a couple of videos, and then we can start talking after that. So one of the videos is 2013, the other one is 2019, and then the last one is 2020. So after that, Rabiya ji, we can discuss the case, and then we would want to know what are the points you would like to discuss today. Okay. Yeah. So first we'll go to the first video. Just give me a few minutes. I'll connect it. जो हो रहा है ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं वो तो ऊपर वाला ही जाने। जहाँ तक मैं सूरज को जानती हूँ वो इस तरह का लड़का नहीं है। मुझे कोई क्वेश्चन मत करो, मैं यहाँ क्यों आई मैं बता दूँ। मैं पहले से आना चाह रही थी, शूट की वजह से मैं आ नहीं पाई। आज मैंने कहा चलो वुमेन टॉक में बात करूँगी। I wanted to share her sadness and I wanted to sit with her and talk to her. She's very disturbed. I understand as a mother. जो लॉस उनका हुआ है वो तो कोई भर नहीं सकता, लेकिन बस मैं इतना ही प्रे करती हूँ कि बस जिया को जन्नत मिले और उसके आत्मा को शांति मिले। लेकिन जिस तरह की टॉक हो रही है उससे ऊपर से देखती हुई आई एम श्योर उसको बहुत तकलीफ में पहुंचती है। लेकिन जो हो रहा है ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं वो तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन मैं यहाँ पे कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं आई, सिर्फ मैं उससे बात करने के लिए आई। तो मैं बात किया ना आई एम। So here, Rabiya ji, this is she's talking about how she wishes well for Jiah. I will take the second video where you see Suraj Pancholi speaking. When we saw you get on stage in Hero, you had broken down because that was your first film, and you had struck from your career at least. It's because I waited at home. My struggle for me was 7 years because I was put in jail when I was 21 years old for something I have not done. I don't want to hide this. Of course, everyone over here wants to know about my personal life, and I would like to talk about it because I have been very quiet. मैं चुप था क्योंकि I believed in the court. I still do believe in the court, but यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, and I don't have 20 years for that. I don't have 14 years for that to wait for my judgment. I have been accused in my case, and you guys, an accused cannot do anything. You can accuse anybody, any single one, and there will be a case for you no matter what. Few points I would put, sir, thought I'm doing, but I need this. If I'm a complainant, I put a case on anybody. I don't have to go to court. The accused has to go to court on each and every date. Okay. Since I was 21 years old, I have been going to the court. I am 29 in a month. Next question. Crocodile tears. Yes. Scripted. But actors In the history of India, my case is the only case where the accused has said, "Ki mera trial chalao." I've gone to High Court and I've said, I've filed a writ petition to expedite my trial. In the entire history of India, what is our population? What is our population? Like, we have billions.
Okay, history of India. My case is the only case where the accused has gone to court and said कि मेरा trial चलाओ. It's been 7 years. Obviously, बगैर investigation के You ना. guys know what I'm going through. But I have nothing to say because I'm not accused. I cannot do anything. I have to wait for the trial to start. The complainant's duty should be to come to court and start the trial if they want justice. If they want justice, they need to come in court. But every time I have a trial, the complainants catch a flight and leave for London because they have a UK visa. A British passport, and the authorities over here cannot do anything about it. That is not fair. I want this trial to start. I want it to end because I want an answer. Whether I'm guilty, whether I'm not guilty, whatever. But start तो करो यार. Start करने से पहले आप चले जाते हो वापस. It's not bloody fair. Imagine if you were in my place. Everyone says, Suraj, my friends, family, they said, Suraj, क्या हो रहा है केस का? I said, पता नहीं यार. मैं तो जाता हूँ कोर्ट. मतलब हर महीने में 2-3 बार तो जाता ही. Police has done an investigation, not once, twice. I have a CBI investigation at the age of 22. Day and night I've sat with them. If they said that there's nothing in this case, why can't the court start my case? Why can't the complainant be there and face the trial? Because it's her duty. उन्होंने मेरे पे डाला है केस. अभी उनकी ड्यूटी होती है मेरे को गिल्टी प्रूव करना. मेरी ड्यूटी नहीं होती है कि मैं इनोसेंट प्रूव. You know, and that's how it should be. And it's a request from all of you sitting over here that someone takes a stand, because the media keeps asking me कि क्या हो रहा है उसका, पर आप लोग क्या करोगे उसके बारे में? You know, I'm the accused. I'm asking for help. Really, guys, please understand. मीना जी. Because Yes. you know, I've not spoken. Let's. And ठीक हो जाएगा, but One it's been second. too long. Rabiya ji. This is the only time. Yeah. Okay. Back to you. Yeah. अच्छा राबिया जी, मीना जी, पहले तो let's Yeah. start with the mother. This of 2013, because ये सूरज का तो interview after few years है. That's the promotion of his film. Yes. Let's talk about the mother. This mother had come at my door. Do you understand me? क्या है कि अंजू महेंद्रू की एक दोस्त, एक तो क्या है कि अंजू महेंद्रू ने पहले ही मोमेंट से ये ऐलान कर दिया था ये सुसाइड है. जब मैंने कहा ये मेरी बच्ची को किसने मारा, ये इंजरीज तो देखो, तो कहती है शट अप, ये सुसाइड है, और सफाई करने लगी, क्राइम सीन को मिटाने लगी. तो उस वक्त मैंने जब सूरज का नाम लिया तो कहती है उसका नाम मत ले, ये लोग बड़े खतरनाक है, तेरे को मार डालेंगे, तेरी फैमिली को भी मार देंगे. ओके. सारा वक्त वो मुझे डराती रही. और उसके साथ में एक औरत थी पम्मी सोमल करके, वो भी इन लोगों के गैंग की है. तो वो एक्चुअली इस सूरज की माँ को लेकर आए, जरीना वहाब को मेरे दरवाजे पर लेकर आए, और उससे पहले जी टीवी वालों ने खटखटाया कि वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू. तो मैंने कहा ठीक है. तो वो लोग ना सेट कर रहे थे अपना मेरे घर के अंदर. घंटी बजी, जब वो सेट हो गया पूरा तो फौरन ही घंटी बजती है, और घंटी बजते ही मैं गई दरवाजे पे. मैंने देखा, दरवाज़ा खोला तो पम्मी सोमल थी. कहती है जरीना आई हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं. मैंने कहा हरगिज़ नहीं, उसको कहो उसके बच्चे ने मेरी बेटी को मार दिया है और मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी. मैंने धाक से दरवाज़ा बंद किया और मैं समझ गई कि ये जी टीवी वाले क्यों आए हैं. मैंने उनको धक्का दे के भगाया. मैंने कहा गेट आउट राइट नाउ, नाउ आई नो व्हाट योर प्लान इज. नीचे मैं देखती हूँ कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जरीना वहाब कहती हैं कि मैं अभी अभी राबिया को मिलकर आई हूँ. अरे मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी. मैंने तो सीधा कह दिया, जोर से कहा. वो पीछे खड़ी हुई थी पम्मी सोमल के, पर घर के बाहर. मैंने कहा इसके बेटे ने मेरे बच्ची को मार दिया, और वो मुझे कहता था कि इसका बाप भी इसकी माँ को मारता था. और सूरज की तो आदत थी, सूरज का खुद मेरे पास चिट्ठी आई है, आई एम वेरी सॉरी, यू नो आई लॉस्ट इट ऑन किया, प्लीज़ उसको कहो कि मुझे मत छोड़े, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ. इस बात पर मैं आपको एक सीबीआई की रिपोर्ट बताती हूँ. एंड इट सेज it is noteworthy to mention that apart from the injury marks on the person of the deceased, Yes. there were various circumstances which were pointing towards the fact
that Mr. Suraj Pancholi was abusive and had a history of violence. Yes. अब ये मेरा लिखा हुआ तो नहीं है, अब आप समझ रहे हैं. फिर how verbally and physically towards Miss Jiah. There is CBI evidence in witness statement dated 14th August 2015 that Miss Khan's fashion stylist recalls dressing Miss Khan for an event in January 2013. She was going for Stardust and for other events. 2013 and noticing bruises on Mrs. Khan's back and shoulders. हम तो थे भी नहीं, हम तो लंदन में थे. Right? And she is the same girl जो उस रात को कह रही थी कि सूरज ने मार दिया, सूरज उसको बहुत मारता था, सूरज ने उसको अबॉर्शन फोर्स किया. तो मैं रो रही थी, तो मैं उठ के मैंने कहा क्या हुआ. तो पम्मी सोमल उसको कहती है चुप हो जा. अंजू कहती है मत बोल, यहाँ मीडिया है, ये बाद में बात करेंगे. तो मैंने कहा नहीं, वेट अ मिनट, मुझे बताओ क्या हुआ. तो ये बात जब उसने मुझे सारी बात बताई तो मैंने पुलिस को बताया. पुलिस ने उस बेचारी लड़की को 8 घंटे ग्रिल किया. और उसके बाद में उसकी पूरी स्टेटमेंट बदल दी पुलिस ने. तो पूरी स्टेटमेंट पुलिस ने क्या किया है, कहा कि भैया तुम लोग सब लोग संभाल लो, तुम्हारे साथ कौन एक्टर है, कौन संभाल सकता है, बड़े बड़े एक्टरों के नाम बताओ, क्योंकि अब पुलिस तो पैसे से संभालेगी, पर इन लोगों को सपोर्ट चाहिए. पुलिस को बड़ों का सपोर्ट चाहिए, मंत्रियों का सपोर्ट चाहिए. आपने परमवीर और वाजे का केस तो देख लिया है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. अब आपको पूरी सच्चाई समझ में आ गई है. तो यहाँ फिर क्या होता है कि अंजू महेंद्र ने जो सुसाइड की बात शुरू की थी, आदित्य पंचोली ने जो सुसाइड की बात शुरू की थी, पुलिस ने 2 घंटे विदाउट इन्वेस्टिगेशन, बगैर पहुंचे वहां पर उन्होंने ऐलान कर दिया सुसाइड है. राइट. और ये मैडम भी जो है वो बाहर कहती है मैं भी राबिया को मिलकर आई हूँ, जिया मेरे सपने में आई थी, उसको तो जन्नत मिल गई. आई मीन आप ये बातें कर रही हैं, मैं समझ सकती हूँ वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनका बेटा इन्वॉल्व है. क्योंकि उनको, इसीलिए वो कह रही हैं. बेटे को तो अभी तक पुलिस ने पकड़ा भी नहीं था, ये तो उस दिन की बात है. बेटा तो पकड़ा भी नहीं गया था, बेटा पकड़ा गया था 11 तारीख को, 11 जून को. और ये बात हो रही है दूसरे दिन की. जब ये आई थी मेरे पास में मिलने के लिए मुझे, तो मैंने, और वो भी इतने डिसेप्टिव वे से, भैया अगर आपको आना है तो उसी रात को जिस दिन हादसा हुआ उसी रात को भाग कर आना चाहिए था ना. लड़का तो गायब, 4 दिन तक नजर नहीं आया. गेट पर फ्यूनरल पे नजर आया क्योंकि मीडिया थी, सारे लोग थी, पूरी जनता थी, उनको शक्ल दिखाने के लिए. और बाकी ड्रामा आप लोग देख सकते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स. और वही क्रोकोडाइल टीयर्स वो इस वक्त भी दिखा रहा है जो सेकंड वीडियो पे. दूसरी बात, इट डजंट फिनिश ओवर हियर. देन इट सेज मिस द स्टाइलिस्ट had received these Jiah had received these marks as a result of being beaten by Suraj Pancholi. Now this is CBI statement, in their statement. And then she also recalls that one day Jiah asked Menaka, do all Indian men hit women? तो उसने बोला why does Suraj beat you? कहती है yeah, but I'll handle now. So then Jiah had told her sister in London in 2013 February when she came there. Suraj Pancholi was drinking and shouting at her, abusing her verbally. He cheated on her all the time and that Jiah was very scared of him. अब आप मुझे बताइए, ये बातें जनवरी 19 को सीबीआई कहती है सूरज पंचोली ने जिया खान का अबॉर्शन फोर्स किया था, और नहीं अगर करना चाह रही होगी तो मारा उसको, क्योंकि इवेंट पे जब वो गई थी तो उसकी स्टाइलिस्ट ने ब्रूसेस देखे. अब ये सारी बातें तो सीबीआई ने पता लगाई है ना. अब आप मुझे बताइए, ये बातें तो मुझे नहीं मालूम थी ना, मुझे तो सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब पता चली है. पुलिस ने तो सब कुछ ढक दिया था और आइकॉन्स को यूज करना शुरू कर दिया था कि तुम भी आओ मेरी मदद पे, तुम भी आओ मेरी मदद पे, और माँ को कह दिया तुम चली जाओ. और बाप की तो बड़ी गंदी रेपुटेशन है, लोग कोई यकीन नहीं करेगा, माँ को यकीन करेगा, तो माँ को यूज करो जितना भी यूज करना है. तो वही हो रहा आज तक, आप समझ रहे हैं. मुझे किसी की भी, मैंने आपको सच बताया है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है. मुझे मेरा यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरा सच मेरे साथ है.
आज मैं आपके प्लेटफॉर्म में आई हूँ आपको इज्जत देने के लिए, इस सच को इज्जत देने के लिए और इस धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए। आप समझ रहे हैं? अब इसमें क्या है, इसमें यही लोगों का नाम शामिल है जिन्होंने सुशांत को मारा, जिसने दिशा को मारा, और हमें मालूम नहीं और कितनी मौतें की हैं। क्योंकि उस रात को बाप कहता है मैंने अपने बेटे को बड़ा समझाया था, ऐसी गलतियां मत कर जो मैं कर चुका हूँ। आप भला कौन सी गलतियां कर रहा है कि आपके बेटा रिपीट कर रहा है। रही बात सेकंड वीडियो की, लेट्स कम टू द सेकंड वीडियो। नाउ द सेकंड वीडियो वाज मच आफ्टर, तब तो उसने ये छूट भी गया था बेल पर। क्योंकि जब उसको पकड़ना था तो पुलिस ने उसकी पूरी एविडेंसेस दिखा दी कि इसने ये कैसे मारता था, इसने गंदे गंदे एलिबाइज करके मैसेजेस भेजे हैं, उन्हें पूरी एप्लीकेशन बनाई कि उसको पकड़ा गया। उसको पकड़ लिया और अंदर। सबसे बड़ा झूठ ये अपनी उम्र के लिए बोल रहा है। अब वो 1990 में पैदा हुआ था, राइट? तो वो कितने साल का था उस वक्त और कितने साल का है अब? ठीक है, कितने साल का था? वो तो अपनी उम्र भी भूल गया। ऐसा हादसा करने के बाद वो सभी कुछ भूल गया, पूरा ब्रेन वॉश हो गया उसका। अब उसको एडिट कर करके ना शुरू में कुछ बोला, ना मौत पर कुछ बोला, ना उसके बाद कुछ बोला, गायब हो गया, बिल्कुल गुफा में चला गया। उसके स्टेटमेंट्स आते थे, कुछ भी आता था एडिट होके आता था, राइट? प्योरली एडिट। यू आर अ जर्नलिस्ट, यू नो हाउ थिंग्स आर एडिटेड। सेकेंडली, फिर उसको ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा ट्रेन किया गया, तो ये बोल ये बोल ये बोल। लेकिन ये उसमें भी भूल गए कि कितना झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि मेरी तो उम्र ही बड़ी कम थी। अरे 14 साल के लड़के भी मर्डर करते हैं। निर्भया का जो केस था, रेप केस में, और मार डाला था। और वो तो माइनर था। सिल्ली किसने डाली थी? अंडर एज 14 साल के लड़के ने डाली थी। तो ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा, इसकी तो बहुत बुढ़े वाली उम्र हो गई है कत्ल करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस यस। हाँ, तो ये मुझे ना कहो कि मैं तो बड़ा बच्चा था। ये तो इसके बाप ने उस रात कहा था, हाय मेरी बच्ची ये बच्ची तो बच्ची थी। मेरे गांडू अपने लड़के को गाली देके कहता है इसने तो अपने करियर की वाट लगा दी। अब आप मुझे बताइए, एक बाप इतनी मेहनत कर रहा है उसके करियर बनाने के लिए और उसने उसकी वाट लगा दी। हमने कुछ नहीं बोला उस वक्त, हम रो रहे थे। बस मैंने यही कहा, मैंने भी जिया को बहुत समझाया था नॉट टू बी विद सूरज, क्योंकि उसने मुझे ऑलरेडी उसकी अब्यूसिव हिस्ट्री की बात बता दी थी। एंड वो माफिया मांग के, अब ऐसा है कि इतनी माफियाओं के खत हैं जो मैंने सीबीआई को पकड़ा दिए हैं, लेकिन सीबीआई तो खामोश है। सुशांत का केस देख लीजिए, कितनी खामोश है। अब सूरज Rabia ji, just one more question here. See, she had given another interview where she said that your poor Jiah, you know, she had a violent mother who used to beat her. And one day she came back from her mother's place. She had a wound in her head, and Suraj was petrified. And he said that she got very scared, and Zarina Wahab was also very upset. Now it seems like they are turning the story upside down. वो तो अब देखिए बेचारों के पक्की डिफेंस में है क्या बोलने के लिए, आप समझ रहे हैं। एंड उसने शायद वो गलती कर गई है, उसने शायद अपने ही किस्सा बना लिया होगा, क्योंकि उसका मियाँ तो उसको बहुत मारता है, ये तो सब मालूम है। हमारी बिटिया को तो भाई हम क्यों मारे? हमने तो हमारी यस आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, like normal families. लेकिन इतनी बड़ी लड़की को और मेरी लाडली को मैं क्यों भला मारूंगी? मैं तो मारती तक नहीं हूँ। यू अंडरस्टैंड मैं क्यों मारूं? इनफैक्ट मैं तो हैरान हो गई थी जब मैंने भी ये बात सुनी थी। मैंने कहा कि भाई इससे पूछो तो सही, किस वक्त की बात कर रही हैं? क्योंकि मैं तो सारा वक्त लंदन में थी। मेरी बच्ची फरवरी में आई लंदन, राइट? फिर वापस आ गई इसके कहने पर कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। मेरी माँ मेरी जब मेरे घर में भी आया था तो अपने बाप को फक यू कह रहा था। मैंने कहा देखो प्लीज अपने बाप को गालियां मत दो। जिस बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया उसको गालियां दे रहे हो, तो व्हाट वैल्यूज यू विल गिव टू माय डॉटर? सो आई विल नॉट I will not lose my breath on this stupid evidences that she's talking about, which really does not even make any sense to me.
I You would like you understand? to see, yeah, I would like you to see one more video where she's talking about Sushant also. So just 1 second. I'll just put that on. Yeah, yeah. 1 second. Yeah. Can I have a glass और of water? दिशा को नहीं मेरे सूरज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है झूठ। और वो जब उस लड़की को जानता ही नहीं है, बार बार उसका नाम इसके साथ जोड़ा जाता है। एक बंदे ने पोस्ट किया था, बाद में उसने हमें क्लियर किया, सॉरी कहा, कुछ भी है। लेकिन वशिष्ठ की बात कर रहे हैं आप, अभिनेता फेसबुक पे पोस्ट डाली थी जो काफी वायरल हुआ था। किसी के बारे में ऐसा पोस्ट डालने से पहले 10 बार सोचिए ना, किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी के रेपुटेशन का सवाल है। एक तो बच्चा वैसे ही परेशान है पहले के इल्जाम से, उसमें भी सीबीआई जांच हो चुकी है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी मतलब ही इज नॉट अ पंचिंग बैग। उसको कुछ भी ऐसा होता है तो पंचिंग बैग की तरह बीच में आकर घुसा देते हैं उसको। वो उसने कहा भी मैं दिशा को जानता नहीं हूँ, तो लोग क्यों नहीं बिलीव करते? नहीं, वो पार्टी में था, किसी और लड़की की फोटो डाल दिया, वो लोगों ने कहा कि ये दिशा की फोटो है। दैट्स नॉट फेयर। किसी के साथ ऐसा मत करो ना, ये जो सूरज के साथ आप कर रहे हैं, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दैट्स नॉट करेक्ट। ही इज इनोसेंट एंड टाइम विल प्रूव। तो इस तरह के मानसिक दबाव इन्हें से ही इस तरह की सूरज और दिशा के बात। आपने देखा उसको मर्डर करते हुए? आई मीन लोग किसी भी ऐसा इल्जाम लगा देते हैं, किसी को ऊपर वाले का डर नहीं है। आई मीन एक दिन आपको अपने आप को जवाब देना है। किसी को ही इज अ मर्डरर, किसने बोला मर्डरर? किसने देखा उसने मर्डर किया? पहले तो सुसाइड का इल्जाम लगाया था, उसके बाद मर्डर का इल्जाम लगा दिया। इन्हीं जो कुछ भी अभी वो जो राबिया मैम बात करती हैं, शी शुड नॉट टॉक, क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, दैट्स नॉट गुड। जी, राबिया ने एबीपी न्यूज से बात की थी। राबिया खान जो जिया की मां है, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा था कि जैसे जिया खान की हत्या हुई है, उसी तरह से सुशांत की भी हत्या हुई है और दोनों में कई समानताएं हैं। पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। और क्या कहना चाहेंगे उनके इतने बड़े दावे को लेकर आप? उनको दावा करने दीजिए ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो खुद भी जानती है कि सच्चाई क्या है। और ये कोर्ट में मामला है। द मोमेंट आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग मोर देन दिस। जो वो बात कर रही है वो भी सही नहीं है। जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना, क्योंकि सीबीआई का जांच हुई थी सूरज के केस में भी, एवरीथिंग इज क्लियर। फिर भी पता नहीं वो अपने होता है अपना गिल्ट छुपाने के लिए किसी और। Yes. Yes, back to you. मैं या मीना जी, ये So मैंने it will कभी lead to the question whether it was involved in the Disha case as well. हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि शी सेइंग कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट को डिसाइड करने दो, पुलिस का मामला है, पुलिस को डिसाइड करने दो, सीबीआई का मामला है, सीबीआई पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। तो एक औरत को इतना वो है, कॉन्फिडेंस है कि पुलिस अपनी जांच कर चुकी है, कोर्ट अपनी जांच कर रही है, सीबीआई ने जांच कर चुकी है, तो फिर ये 8 साल क्यों गुजर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए ना। मैं भी तो ये बात का इंतजार कर रही हूँ ना कि कोर्ट किसी फैसले पर आए। अब सच्चाई तो पुलिस भी जानती है और सीबीआई भी जानती है, और कोर्ट को कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं और कोर्ट को कटहरे में खड़ा कर दिया कि अब आप जज हैं, आप ही का ट्रायल हो रहा है। अभी हम जज को ट्राई करते हैं कि जज इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, क्वेश्चन रेज करेंगे, क्योंकि जब जज ने मेरे केस में ट्रायल में क्वेश्चंस रेज किए, उन जज को बदल दिया गया। भाई आपकी जेब में जंत्री मंत्री तंत्री सभी लोग हैं, यानी आपके पास तो पूरा मंत्रा है, तो आप तो सबको मैनेज कर रहे हैं। अब वाज़े परमवीर ने तो मेरे दिल को इतनी ठंडक पहुंचाई है, बता के एक्सपोज करके कि होता क्या है। अब आप होम मिनिस्टर आपकी जेब में, राइट, उस वक्त के होम मिनिस्टर भी आपकी जेब में थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे मालूम है कि किस मिनिस्टर ने मुझे कहा था, अरे अरे भाई प्लीज़ मुझे इन्वॉल्व मत करो ना, तो ये तो इसका बाप तो मेरे गाना गाने लगेगा। अब कौन सा गाना गाएगा आपका?
You're talking about the state minister. या अब इसको ऐसी आपकी कौन सी बात मालूम है जिससे आप डर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो ये जो कह रही हैं कि राबिया बड़ी वायलेंट है, ये बेचारी अपना ही किस्सा सामने लेकर आ जाती है, अपनी आप बीती। वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, सावन के अंधे को हर चीज हरी हरी नजर आती है। हमने तो नहीं कहा जरीना वहाब करीब क्रिमिनल है, नो, हमने तो नहीं कहा। पुलिस ने कहा कि इसका लड़का अक्यूज्ड है, राइट। अब पुलिस कह रही है इसके लड़के को अक्यूज बनाते हैं अबैटमेंट के लिए, बट अबैटमेंट के लिए सबूत चाहिए ना, और पुलिस के पास में सबूत नहीं है, लेकिन केस लगा दिया है। अब केस तो लगाना है, तो लेट्स भाई, मर्डर का नहीं कहते, अबैटमेंट का कहते हैं, फिर प्रूफ कर देंगे। तो अगर पुलिस की बात सच थी और उनके पास अबैटमेंट के प्रूफ थे, तो केस मेरा, व्हाई डिड इट गो टू CBI? It went to CBI because the judge saw that there was a violent action over here. The judge saw from the pictures that it is not a simple case of suicide. Yes. अब मैडम जरीना वहाब तो फोरेंसिक एक्सपर्ट हो गई हैं, राइट। मुझे तो मालूम नहीं CBI को फोरेंसिक एक्सपर्ट लेने की क्या जरूरत है, जब जरीना वहाब जैसी फोरेंसिक एक्सपर्ट बैठी हैं वहां पर। वो कब से वो साइंटिफिक एनालिसिस करने लगी हैं। So what can I say about her defense? That is her defense tool, and she has nothing else but that. But I have got questions which I'm not asking Zarina Wahab or Suraj Pancholi, who has never met me. After the incident, he never met me. अगर आपका इतना प्यार था जिया के साथ, तो आप आते मेरे से। तुम्हारा बाप मेरे पैर पे गिर के माफिया मांग रहा है उस रात को, और तुम तो आए भी नहीं। तुम्हारे बाप से तो मेरी बेटी का रिलेशनशिप नहीं था, तुमसे रिलेशनशिप था, तो तुमने मुझसे माफी तक नहीं मांगी, पैर पे आके गिर के। अरे हाथ जोड़ के भी नहीं, अरे मुंह से बोल के भी नहीं। तुम फ्यूनरल के दिन भी तुमने मुझे ना सॉरी बोला, आई एम वेरी सॉरी, दिस हैज हैपेंड टू यू, नथिंग। तुम्हारे चेहरे के पर 1.25 लाख का गिल्ट लिखा हुआ है। तुम किससे छुप के जा रहे हो? तुम अभी तक छुप रहे हो इसीलिए क्योंकि तुमने अपनी छुपाई के इतने पैसे दे दिए हैं, इतना इन्फ्लुएंस यूज कर लिया है, जो सारा हिंदुस्तान जानता है। मैं तो सच बोलने के कोई पैसे नहीं दूंगी, और ना मैं सच को बोलने के लिए किसी के पास जाऊंगी। मैं तो कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हूँ। अब कोर्ट अगर इधर देखे उधर देखे, अब बगैर एविडेंस के वो कोर्ट क्या कह सकती है? आप समझ रहे? क्योंकि एविडेंस जिसको ले जाना है वो ले जा नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मीना जी, आज के दिन मेरी पिछले हफ्ते हियरिंग थी, बिकॉज कोविड की वजह मुझे डेट पे डेट मिल रही है, लेकिन सवाल एक ही जगह खड़ा हुआ है, और ये मैडम जरीना वहाब को भी समझा दीजिएगा कि CBI इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। CBI is asking for forensic for the telephone and dupatta and other evidences to send it to the forensic laboratory so that they can come with a conclusive report. So I think Madam Zarina got a very wrong information from others that CBI investigation कर चुकी है। आप समझ रहे हैं? CBI की इन्वेस्टिगेशन अगर हो गई होती तो ये क्लोजर भी हो गया होता। ये कह सकते हैं कि उनको समझा दीजिए, उनको बता दीजिए कि कुछ वक्त तक आपका इन्फ्लुएंस काम आ चुका है, पर हर वक्त आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सिर्फ कुछ वक्त के लिए बना सकते हैं, पर हर वक्त नहीं बना सकते। गाजियन परमवीर ने सोचा था कि इनएविटेबल हैं, इनविंसिबल हैं, कभी इनका खुलासा होगा नहीं, और गुनाह पे गुनाह करते जाएं। पर हुआ ना, तो हम भी वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और उनकी डिफेंस में एक वो माँ है, उनको भेजा जा रहा है कि भैया प्लेटफॉर्म पे आप खड़ी हो जाइए, आप कुछ बोलो, बस कुछ बोलो। अब वो बेचारी क्या बोलेगी? वो मुझे कहेंगी मैं वायलेंट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ। वो इनको कहेंगी मेरी 2 बच्चियों को कुछ कह सकती हैं, मेरे मियाँ को। आई मीन शी कैन, ऑल दैट इज व्हाट शी हैज इन डिफेंस। एक मैं वीडियो देख रही थी उनका, जिसमें वो कह रहे हैं, लोगों ने पूछा कि उसके जिया की तो ऐसी इंजरी मार्क्स हैं कि वो तो लगता ही नहीं है कि ऐसे सिंपल दुपट्टे से हो सकती है। अरे भाई, जब कोई हैंग करता है तो इधर उधर इंजरीज आ जाती हैं। अब ये देखिए, शायद उनकी फोरेंसिक साइंस की एजुकेशन भी सही नहीं है।
You understand me? So, please get your facts right. Because this is not a joke. This is a question of somebody's life. It's a question of my daughter's life. Yes. It is a question of her son's life. I understand. But it is a question of my daughter's life also. I have all the rights to ask questions from the authorities. Please answer me that how did these injuries come? That is why, मीना जी, I had to run to Supreme Court. ना तो मुझे क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और कहने के लिए कि make these evidences as part of the charge sheet, because CBI has been pressurized and they have not put this as a part of the charge sheet. These are the logical answers I have got. I'm not a forensic expert. That is why I went to the forensic expert. You understand my point? Anju Mahendru became the cause of death expert. This is suicide, right? Zarina Wahab has become a forensic expert. I mean, they have got within their home and community all the experts. No wonder the case is delayed this way. And reminding another thing about court, Surat Pancholi saying he is an accused. He's been accused because the police has made him an accused. Yes. You understand me? I was asking the questions from the police that who has killed my child? I know of the boyfriend whose conduct was like this. And I want you to give me the answers. And they assured me that they will give me answer. But under the pressure, as the ACP also told me, that under the pressure, we are told not to look into this case. There was another officer who was saying we are getting pressure to shut the case. Kyun bhai? Is it some cherry picking cases? So Surat Pancholi says, I was, first of all, lying, mother saying, my son never lies. The first lie is about his age. Right? Second lie, that he's not violent. Where CBI's report, I've already read it. Photographs you have seen. The first thing CBI officer came into my house and asked me, did Suraj wear a watch? Did you see him wearing a belt? Now, these are not questions raised from me. These are the questions that was asked. Yes. Is there any belt in the house? Is there anything? Do you understand me? What kind of watch you have seen him wearing? So I gave him the description because Surat Pancholi came in his Jaguar to pick up my daughter and me to take us to a restaurant. And that's where I saw him totally in a branded things, from shoes to watch to belt. So that's why I noticed, and I told my daughter, ye to, sirf brand outside hai, inside nahi hai. And he's not a brand inside. I'm openly saying he's an uneducated guy, which Zarina and others should feel sorry that they should have educated him. They should have slapped him when he made first mistakes so that he would have learned his lessons. They should have raised him spiritually. And putting an allegation on me of violence and all like that, that's their call. आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, मैंने सवाल अथॉरिटी से पूछने हैं, समझ रहे हैं, और मैं अथॉरिटी से जवाब मांग रही हूँ. अब वो अथॉरिटी देती है नहीं देती है, that is a question that we are waiting to see. Yes. As Sushant's case, you can see. रही बात talking about me not going to the court. मीना जी, इस लड़के को तो दिवाली के पैकेट की तरह पुलिस ने छूट दे दी थी. It's a present. जाओ बच्चा, छूट. Go and do what you want. Go and do whatever criminality you want. Because ये तो money making machine है. भाई अगर criminals नहीं होंगे तो पुलिस की वर्दी भी नहीं होगी. आपने वाजिया और परमवीर का तो देख लिया केस. Yeah, not only that, Rabiya, recently a police officer was giving cake to one of the biggest criminals in the jail. So that is a pattern. Yeah. So he is saying that I don't. It was me. Please give them the information. It was me who got the case opened. Now to shut the case is court's decision, not mine. I have opened it and I will leave it open. And I had been, only because of the COVID restrictions, I am not able to come to India, right? Mr. Modi ji says, India is free for travelers. The first flight I will catch and come. And you will see me in the first hearing. No wonder
in couple of hearings, when I was there drenched in rain, right, and my umbrella broke because of the storm, Yeah. the judge said, भाई ये कहाँ है? तो आ नहीं सक रहे हैं because बारिश बहुत है. ओ तो प्रिंस आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश है, और ये लंदन से आई हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, उनको बोलो फौरन इधर आए. And she waited till he came. और ये कह रहे हैं कि मैं तो अक्यूज्ड हूँ, मैं जाता हूँ, और जो कंप्लेनेंट है वो तो आती नहीं. कंप्लेनेंट पुलिस है, सीबीआई है, महाराष्ट्र स्टेट है. You understand me? The case is against Maharashtra state, against Suraj Pancholi, not Rabiya Khan against Suraj. तो ये correct करवा दीजिए please. The case is against state of Maharashtra versus Suraj Pancholi. So he is a state accused. It is the state that is holding him by the noose, Yes. not Rabiya Khan. Rabiya Khan is only asking questions from the authorities. Please tell me. I would like to also tell you, Meena ji, Please, please. about the investigation where CBI was pressurized not to investigate this case. Yeah. Right? But CBI has to put a charge sheet. They have to, because it's a court order. Yes. Now what to do? They are in catch-22. Yeah. They are in Maharashtra. They are under the pressure of the Maharashtrian government. The court is Maharashtra state, and CBI is central government. So please tell your audience to make these things clear. That the complications, even in Sushant's cases, is the state of Maharashtra. Yes. When the new government will come, probably declaring that they will set new rules for law enforcement and be very firm on these criminalities. Then things might change. Otherwise, please do not expect anything. Anything. I am also not expecting that the stars will fall from sky. No, Meena ji. I have to tell you what happened. Now, CBI, if Zarina Wahab was such a forensic expert, but CBI did not choose her expertise, but send the evidences, send the report, send the questions to PGI, which is a Chandigarh forensic department, to answer certain questions without sending the evidence. Now, without sending the evidence, why? Because the evidence has not been handed to CBI, and that is why CBI has not investigated, but asked a generic questions. Now, it is like if I ask you, क्या मीना जी, कोई सुसाइड हैंग करके सुसाइड हो सकता है? तो आप बोलेंगी हाँ हो सकता है. तो अगर कोई सुसाइड करता है तो अगर उसकी राइट को इंजरी है, नॉट है, तो लेफ्ट को इंजरी आ सकती है. तो आप कहेंगे डिपेंड करता है क्या लिगेचर है, क्या है, सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे. आप समझ रहे हैं? तो आप इस तरह के सवाल, और मैं आपसे जेनेरिक क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. तो सीबीआई ने भी यही किया, जेनेरिक क्वेश्चंस पूछे. एक रिपोर्ट तो बना के चिटकानी थी ना चार्जशीट पे, तो वो क्या पूछते हैं? PGI report is incomplete, non-committal, and does not even remotely answer the fundamental questions that CBI is supposed to reveal. This is in the petition. Yeah. Most crucial question, CBI, what is the actual cause of death on the basis of medical reports, on the medical report that they had sent? Yes. PGI is answering, possibility of asphyxia due to ligature constriction of neck. अब आप बताइए, कोई किसी का गला घोटेगा तो एक्सपीशिया तो होगा ना. Yes. एक्सपीशिया का मतलब है कि हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, द डिसकनेक्शन ऑफ ऑक्सीजन. Yes. अब ये वर्ड एक्सपीशिया यूज करते हैं पुलिस वाले, क्योंकि मासेस को मालूम नहीं है. मासेस सोचती है अरे एक्सपीशिया कोई खंजर होगा. एक्सपीशिया हैंगिंग में ही होता है, बाकी किसी उसमें नहीं होता. भैया डुबकियां मार के भी एक्सपीशिया होगा, पिलो रख के भी एक्सपीशिया होगा, मुंह दबा के भी एक्सपीशिया होगा, गला घोट के भी होगा. There are expedia is a word. Yeah, many. Yeah. Okay, let's continue. Being the cause of death cannot be ruled out. That expedia is the cause of death, you cannot rule this out. Then expedia. So as per medical report, it is expedia due to
constriction on the neck. CBI, whether injury on the chin, now there is an injury on the chin, and on the neck of the deceased are ante-mortem or post-mortem in nature. In nature, PGI says the possibility of injuries and the nature of being ante-mortem cannot be ruled out. Now the ante-mortem, अरे एंटीमोर्टम है, एंटीमोर्टम है, अब कोई सोचेगा यानी कि पोस्टमार्टम के बाद। एंटीमोर्टम का मतलब है कि ये इंजरीज मरने से पहले इन्फ्लिक्ट हुई थी। अब ऑडियंस बेचारे मासेस सभी ने थोड़ी साइंस पढ़ रखी है। अच्छा, now whether the ligature marks seen on the deceased can be caused by dupatta and found in suicidal hanging or homicidal hanging. Yes. So these are the key questions. Okay. Now whether this is the, so in this the expert is saying that I cannot give the opinion. Whether, as you are seeing the injuries, can it be by suicide or homicide? Yeah. This is the question CBI has asked. And the doctor is saying, I can't give any opinion on this unless I do not see the ligature. और मैडम जरीना वहाब ने बगैर ऑलरेडी फतवा दे दिया है, given a statement. हाँ, अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि अरे भैया हैंगिंग से तो, और इतनी कैजुअली एक माँ हो तुम भी भाई कह सकती थी भैया मैं तो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो नहीं मालूम है, ये पुलिस पता लगा लेगी या आपकी जेब में जो बैठे हैं वही पता लगा लेंगे। Even Rabiya ji, see the way she starts the interview, she says that her son fell in love with a girl who's already fallen in love and once tried to commit suicide. Her wrist had cutting marks on it, and I had to warn my son not to go into an affair with her. Can you imagine the way she started the interview? It is so mean. The son came up with कि भाई सुसाइड तो कैसे करेगी, इसने तो कभी किया नहीं, नहीं पहले भी किया था। तो उनको तो कुछ, अब आप बताइए, आज तक जिंदगी में क्रिमिनल ने कहा है, क्रिमिनल को तो सबसे पहले लॉयर कहते हैं प्लीज whatever will be the charges, please I am not guilty. Why? Because this is not the trial of the accused or the complainant, this is a trial of a judge. Yes. It is not the trial of the accused. So they have to say we are not guilty. Yeah. He's not guilty of abusing Jiah. He's not guilty of of abortion. He's not guilty of beating her. He's not guilty at all. Is the first line, because lawyer भी बेचारा कैसे पैसे बनाएगा? हाँ, कैसे पैसे बनाएगा? पुलिस अगर सच्चा केस लेके भी जाती है, एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा था हम सच्चा केस भी लेकर जाते हैं तो अक्यूज्ड जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि वो कोर्ट को भी मैनेज कर लेते हैं, औरों को भी मैनेज कर लेते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर लेके आते हैं जिसका फेस चलता है, whose face is more valuable than his yes and हम लोग मारे जाते हैं, फिर हमारे ऑफिसर्स हमको लात मारते हैं, तो हम कहते हैं वो लोग सब पैसा खा रहे तो हम भी खा ले, तो खत्म करो। यही हो रहा है एक्चुअली। मैं तो लोगों की आंखें खोल रही हूँ, मैं तो लोगों को सच बता रही हूँ, जो अंडरस्टैंड नहीं, और जिनको झूठ बोलना है वो बोलते रहें भाई, इवेंचुअली सच तो खड़ा होगा। मुझे इस बात का डर नहीं है कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, कोई जल्दी भी नहीं है। जब होगा वक्त पर होगा, जैसे होगा, मैं खड़ी हूँ, जिंदा हूँ तो लड़ती रहूंगी और खड़ी रहूंगी। Then the possibility of homicide cannot be ruled out. You understand me? This is Jason Payne, forensic expert, saying that this is a staged homicide. हम तो कहते हैं कि प्लीज मीना जी आप मुझे बताइए, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है इन लोगों का, मैं उनको जेसन की रिपोर्ट दे देती हूँ, मैं इनको चार्जशीट दे देती हूँ, मैं इनको और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट दे देती हूँ, और मैं डिजिटल फोरेंसिक की भी रिपोर्ट दे दूंगी, जो सीबीआई अभी फोन मांग रही है, कह रही है कि 2 भैया हम खोलना चाहती हैं, क्योंकि गुजरात वाले ने तो कह दिया कि पासवर्ड नहीं मिल रहा है। भैया वो तो इतना सच्चा लड़का है, वो तो कभी झूठ ही नहीं बोलता है, लेकिन पासवर्ड नहीं दे सकता।
आप समझ रहे हैं? तो एक्चुअली मीना जी, कहानी शुरू होती है by managing the law enforcement. Yeah. Basically, if the law enforcement is so loose and so careless, Yeah. then what? You know, I can understand the accuser's mother, I can understand the accuser's family. कौन ऐसी ह्यूमिलिएशन, बदनामी कौन बर्दाश्त करना चाहता है कि सारी दुनिया जाने कि हमारे लड़के ने ये किया, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं होती ये कहने के लिए कि अरे जिया तो डिप्रेस्ड थी। अरे मैं कहती हूँ जरीना वहाब, जिया मेरी डिप्रेस थी तो तेरा लड़का डिप्रेस लड़की के साथ क्या कर रहा था? Yeah, exactly. तो तेरा लड़का डिप्रेस लड़की को और मार के डिप्रेस कर रहा था। तेरा लड़का उसके साथ में सेक्स करके उसको बच्चे देना चाह रहा था। एक डिप्रेस लड़की को बच्चा दे रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये किस तरह का लड़का है? और तू इतनी डिप्रेस्ड लड़की को उस रेस्टोरेंट्स और सब जगह ले जाके उसके पैसे खर्च करवा रहा है। तो तू कर क्या रहा है? और ये बातें मुझे जब मेरी बेटी passed away, then when everything was coming on the surface, her accounts, I never looked into her accounts. When CBI brought all the accounts and call logs and everything, then we saw that how the police has manipulated. Okay. And then when we got CBI's charge sheet, then we understood that CBI has done some work, but not the important work. Yeah. Yeah. Do you understand me? But why? Who stopped them? What is such an influencing factor in Maharashtra that has influenced CBI, the central government party and agency, not to investigate? You understand my point? Yes. So Yes. why? Because I am nobody. Because I am not close to the Prime Minister or the Home Minister. Because I cannot influence them. Because I am a simple mother fighting for my daughter who's gone, and it's been 9 years now. This is the 9th year that I'm fighting, and they are all watching. You think that Madam Zarina Wahab is so competent and CBI is so incompetent? When American consulate went to Rakesh Maria, that time CP, right? And you know everything about him as well, which is known to public. He said, when the Americans said that we are ready to help you, because she's an American citizen and they can only help with the permission of government. Yes. Yes. So if the government is going to give permission, then Americans are ready to help, even today. Yes. So when they went to CP Maria with me and my lawyer, CP Maria was already ready to form an SIT. Why? Because at that time, the lawyer who was representing me was Tony Jetmalani. Yeah. And what happens? The lawyers, see, law enforcement is all hand in glove. Yes. Yes. So the moment the CP came to know that it is Tony Jetmalani, who recognized what my case is, his father. You're talking about Ram Jetmalani or Mahesh Jetmalani? Ram Jetmalani had my case. He gave my case to Tony Jetmalani. Okay. Okay. From Tony Jetmalani, how are they related? He's a son of Ram Jetmalani. Okay. Okay. Ram Jetmalani actually who took Jessica Lal's case. Yes. Yes. Who took Jessica Lal's case as a pro bono, because he says this is such a loss. Yeah. The family, the sisters have lost their parents after the death of the daughter, and this is an open case of murder. He took the case on pro bono, right, and made sure that the sisters get justice, that Jessica Lal gets justice. Yeah. So when I approached him, I flew down to Delhi from London. He saw my case. I had police charge sheet, I had photographs, I had many evidences. He said he will take my case and give it to his son, because his son is in Delhi or is in Bombay. Right? And my lawyer at that time, Mr. Tiwari, was actually with Ram Jetmalani, but he was very keen to take it under his wings for his own name, fame, whatever. Yeah. You know. Now, Tony Jetmalani came to represent me. Police immediately said to the court
We are ready to listen to Rabiya. Please tell her to give me all her grievances, all her grievances. They didn't take, at that time, say, we have all Zarina Wahab's grievances with us. They said, in the court, we are ready to take Rabia's grievances. They are not my grievances. They are the facts that I'm asking questions from police. Yeah. Do you understand me? Yeah. And immediately I was asking for SIT at that time, not even CBI. And the CP says, has already formed an SIT with the same officers who were there that night covering the whole case. Then I went again to High Court asking for CBI because I don't trust police. I don't want SIT. I want CBI. CBI was reluctant to take the case because CBI knows that they are in Maharashtra and what will happen. This is what I want to tell, that in Maharashtra, as long as this government is there, do you understand me? I have a very hopeless case. I have my doubts. And I have already, Minaji, prepared the whole 300 pages report and given it to CBI and the court and to the accused that please read these 300 pages. Read the concocted story of yours that you have put in the chart sheets, in both the chart sheets, and give the answers that I have asked. I am not speaking with that kind of pride or anything. I am very humbly asking. I have anger, that's why my voice comes out like that, because there is a pain inside me, and there is a little anger that Yes, how absolutely. you're playing with somebody's life. I am not at all coming as an authority, because I'm not an authority. And I have no authority over anything. But I have an authority over my child and the questions that I want to ask. If Zarina Wahab can answer me questions, then she better write those answers and give it to the court. Answer, and please come up with an plausible answers. Because if she will look into the pictures and give us an plausible answer, her answer will be, "Are, ye to murder hai. Hai, ye to like father, ye to bachchi thi. Hai, bichari ka qatl kar diya." On that, she will say, "Are, maa ne qatl kar diya." Thank God there was CCTV. Thank God people could see who is coming in and out. Exactly. Thank God there was And biometric. the father says that it was a doctored video. Yeah. That video was given to us by police, and police did not make it as a part of the chart sheet. Who is controlling police? And the father says, "I'm influential." I wish I had close connection with the Prime Minister. I wish I had close connections with the Home Minister. I wish I had close connection with the Maharashtrian government. I wish I was very, very close to the NCP. I wish I had devoted so much time influencing these people rather than raising my 3 daughters. I'm a single parent, Mina. And I devoted my life and myself in raising these children spiritually. You understand me? Agar if Jiah was such a depressed person and all that, whatever had her history was, Lee Strasberg in New York, the world's #1 institute, would have not taken my child. You understand me? The colleges and universities see your background. They see So, your Rabiya ji, going back to the hearing, hearing recently. So, what did they say? They are Meena ji. I took the report to CBI, and when CBI was saying that they cannot open the digital, I took CBI to the court, and when the judge also asked, "Okay, give the device to Rabiya Khan," they said, no, we can't give her because she will tamper. But when you can't tamper, how can I tamper it? So when I gave them the digital forensic report of FBI that all the digital devices can be cracked and the data can be retrieved, even if the phone is broken, even if the phone is burnt, it can be retrieved. It can be retrieved. And the judge also very clearly told CBI that recently they have heard somebody's conversation who's already dead.
That means that particular people had cracked it. Now, if you Yes. will give me the phone, then only I will be able to do. You gave me certain evidences, like you gave me the forensic report, you gave me the pictures, you gave me, uh, 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 you know, the laboratory reports. So I took them to the experts and I got the opinions Yeah. and I got Yeah. the actual report, right? Mm, mm, But they have not given the dupatta and the phone, not even to yeah. CBI. Mm, They have not even given all the call logs. Even the call logs are tampered. So if they will give the original from the networks, it is not possible that there are 30 people and all 30 people are using one network. mm, mm. Am I right? So Yeah. आप बताइए एक कॉल लॉग दी है, राइट? सभी के एक ही नेटवर्क है, एयरटेल। लोग उस वक्त तो पता नहीं आइडिया भी यूज करते थे, वोडाफोन भी यूज करते थे, तो एयरटेल भी था, देयर सो मेनी, जियो So है many. आज। Mm, mm. So anyway, Meena ji, I am telling you that somebody has to tell Suraj Pancholi, Suraj, go and study law probably. Then maybe he will be able to fight his case better. Then he will know that who is a complainant, what is the role of a complainant, what is the role of an accused, and what is the role of the court and the police and the law enforcement. He will be able to know that it's the prosecution who has to take the who has to prosecute him. Yeah. You understand? And the prosecution has to have evidences. Yeah. If your influential father or your icons or your mentors have so much influence not to take the evidences to the court, then I am sure you are doing the trial of a judge. Yeah. This is what I will have to say. Mm. I am here standing to see what they are bringing, because whatever I have submitted, I submitted through the orders of the Supreme Court. Yeah. Whenever CBI never took anything from me, police has never taken anything from me. Whatever they collected from the house and whatever I had to give them, it had to go through the court. Yeah. Even Deepti's drive, I was talking to her saying, you have to submit it to the court so Yes. that the court gives orders to give it to CBI. Yes. Do you understand my point? Yeah. So, Yeah. Yeah. which I did. Yeah. And I am telling her is because this is the knowledge I have. Yes. Yes. So there is nothing that मेरी pocket में CBI है या मेरी हाँ, pocket में पुलिस है या मेरी pocket में कोई है. But ऐसा मैं कोई ऐसा काम करूं कि I may be able to have great influence with the government, that I can serve them also, because now my children are grown up. No, I'm sure everybody knows what is happening. Yes, and it is a very, very sad thing. Rahi baat, I was watching your second video on Disha Salian, Yeah. that ABP News went and said Rabia is saying this and that. That was, I want to clarify this. I was in London when this happened. And when I heard about Sushant Singh's homicidal death, I will never say it is a suicide, homicidal death, it was like a trauma to me, because my old wounds woke up. Memories came back. Yes. Yes, it came back, and I went and I wanted to console the family. Yeah. So that was a very instinct of mine Yes. Yes. that came out, and I'm very honest about that. Then after that, in the media, on television, there were some clips showing the father in that police vardi, Yes. and Suraj Pancholi with his hat and Yeah. rubbing nose, comparisons, and then showing, his association with Sushant, his association with in a party where there is some Khatri and then Yeah. few Yeah. people, all these put together and all, his association with Disha Salian, that Yeah. videos coming up and conversation coming up that he was having an affair with Disha, and Disha was expecting a baby, and Sushant said, I hope you don't do the same thing with Disha as well, what you did with Jiah. These are the things that were popping up now, right? And I am looking at such similarities that Riya Chakravarti did, which I will say with great authentication, that all what she did was such a pattern, like a blueprint that happened with Jiah. Do you understand me?
It was such a blueprint. It looked like there was some mastermind that was working with it, with some blueprint. Yeah, yeah, And on that basis, I said, well, if that is the blueprint, then who do you suspect? It should not be my suspicion, it should be the police's yeah, suspicion. yeah, But so police was diverted on nepotism. So the nepo kids have killed Sushant. yeah. So who are the nepo kids? Hmm. If indirectly somebody is talking about nepotism, so indirectly इशारा आ रहा है कि नेपो किड्स की तरफ देखो. Yeah. आप समझ रहे हैं? देखिए, इसमें भी बड़ी गहरी बात थी. और पुलिस किसको देख रही है? बड़े नेपो किड्स को तो नहीं बुलाया पुलिस ने, लेकिन उन लोगों को बुलाया जो नेपो किड्स को प्रमोशन करते हैं. Yeah. पूरा डाइवर्शन पूरा. और यानी कि बेवकूफ बनाने की भी हद हो गई. Yeah, and that's it. That's it. Make fools of the public. Yes. So Meena ji, आज के लिए तो I think Yeah, this is. Yeah. I have this much to say. There was, if any other clip is there, another thing Zarina Wahab had said, which I heard. Somebody asked me कि मैंने इंश्योरेंस के लिए मर्डर एंगल डाला. Yeah. देखिए, पैसे का ख्याल तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आता है जो पैसे का सोचते हैं. ना मेरी बच्ची पैसे का सोचती थी, इसीलिए तो वो खर्चा करती थी, और इसीलिए वो खर्चा करवाता भी था इसी से, क्योंकि पैसे की सोच तो उसके लड़के के पास है. और मेरी बच्ची जो 24 साल की लड़की, उसकी क्या इंश्योरेंस होगी? अरे हमारी अपनी खुद की इंश्योरेंस नहीं है. मेरा तो घर भी इंश्योर्ड नहीं है. A young child. तो ये बात मैं कहूंगी कि इसको भी कोई कुछ भी कह देता, ये बोलो तो वो बोल रही है. अब वो इतनी Without thinking. Yeah, without thinking they are saying it. विदाउट थिंकिंग ना कि ये पैसे के लिए कर रही है, ये एंगल. अगर ये But एंगल, here, Rabiya, you see, there is a point here because, see, the earlier deaths, if you are looking at Sridevi and all that, were based on that. So they're just taking the same script and, trying to put it on others. आप श्रीदेवी की जो बात है, पहले भी उसकी मम्मी के साथ में कुछ हुआ था लॉस अमेरिका में, तो इंश्योरेंस, तो ये तो वही अगेन उन्हीं लोगों के ख्याल आते हैं. This is the same script Birds of that feathers they flock together. Yes. सेम कलर के कबूतर हैं. तो Only one more point, Rabiya ji, I'll just discuss with you. See, some of the viewers said that, see, you're a very strong personality, a very different kind of person. How did you have a relationship with Anju Mahendru, who, does not seem your type, and also seemed to be a mole in your, in the whole story? तो अंजू महेंद्रू को जब मैं जानती थी, जब मैं इंडस्ट्री में आ रही थी, उस वक्त अंजू महेंद्रू had broken up with Rajesh Khanna, she was already a film actor. And I did not then know her so well. She was not my friend. She became my friend actually, jo so-called friend कहूँगी, is from 98. Yeah. No, from 89. From 89. And she used to come to London. So, she would come and stay with me. So, तब जाके मेरी थोड़ी दोस्ती बढ़ने लगी, because there was some issue of her stay and something, and her mother actually requested me, so I didn't mind. तब से मैं उसको जानती हूँ. अब देखिए, I have evolved over a period of time with friends from my school, from college, from university, and also when I was initially married, and so you lose people like that. With Anju Mahendru, I used to live in London, she used to live in India. So whenever I went to India once a year, that's when I used to see her. Do you understand me? तो हमारी ऐसी, ये नहीं कहूँगी कि गहरी दोस्त, जो गहरी दोस्ती इसकी जरीना और आदित्य पंचोली और मोइन बेग वगैरह के साथ है, वो मेरे साथ है. In fact, वो कभी-कभी मुझे admire करती थी with certain spiritual knowledge that I used to have, and I used to discuss. And I used to communicate with her on numerologies and other things of sciences that that I used to have some knowledge about. But otherwise मेरी इतनी कोई खास दोस्ती नहीं थी. In fact, मैं हैरान हो गई थी कि एक 20 साल की लड़की, 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 20
अगर आप इतना आके मेरे पास रहती हैं और जब भी मैं आ रही हूँ तो एक अपनी लिस्ट दे देती हैं लंबी कि तुम आ रही हो तो मेरे लिए प्लीज़ ये ले आना, और एंड मम्मी ये मंगवा रही हैं, फला वो मंगवा रहा है, तो which I used to do it. It doesn't matter to me. And she used to invite my children. They were little girls for dinner and supper and all like that. So that was very kind of her. And she's a single lady. She used to call me, क्या कर रही है अकेली है तो आजा घर आजा. तो इस तरह का एक दोस्ताना, इसको दोस्ताना कहेंगे. इसको ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको बहुत ही अंदर बाहर सब जानती हूँ. नहीं, ये सब बातें तो बाद में मुझे सब पता चल रही हैं. इनफैक्ट एक सीबीआई ऑफिसर ने मुझे कहा था आपकी कितनी दोस्ती है. मैंने कहा क्यों, ऐसा सवाल क्यों कह रहे हैं. कहते आप जरा उससे होशियार रहिए. अब उसने मुझे ये क्यों वार्न कर दिया. फिर उसी के अंदर के दोस्त जो उसके घर में बैठते हैं, अभी भी बैठते हैं, वो मेरे पास आके मुझे कह रहे थे कि तुम मत आया करो वहां पर, मत उससे बातें बताया करो, वो सारी बातें आदित्य को बता देती है. एंड विच डिड हैपन. तो फिर मैं समझ गई. राइट. मैंने फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़ के, जिस दिन मैं उसके पास घर पे गई और मैं रो रही थी, मैंने उसके पर स्टिंग ऑपरेशन किया कि पुलिस की स्टेटमेंट कुछ और कह रही है और तुम तो मुझे कुछ और बता रही हो. तो उसने मुझे कहा नहीं, मैंने तुम्हें जो कहा, दरवाज़ा खुला हुआ था और मोइन बेग ने नहीं कहा कि नॉट इधर भी थी, इधर भी थी, इधर भी थी. मुन्नू ने और मैंने एक ही नॉट देखी है, वो भी राइट साइड में कान के पीछे थी. और यहाँ पर इंजरी थी. कहती है हाँ, मुझे ऑफिसर ने पूछा था कि ये तुम्हारा कड़ा तो नहीं लगा. तो मैंने कहा पर ये बात तुमने स्टेटमेंट में क्यों नहीं दी. तुमने ये स्टेटमेंट में क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पास बैठी थी जब जिया का फोन आया था. ये बातें तुमने क्यों नहीं कही. कहती है मैंने ये सब कहा था, पुलिस ने लिखा नहीं, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट आईओ पुलिस ऑफिसर लिख रही थी और उसने इनफैक्ट कुछ ऐसा लिखा था. तो मैंने बोला ना ना ना, इसको करेक्ट करो. तो मैंने कहा क्या था. कहती अभी तो मुझे याद नहीं है. ये तो मैडम बहुत Tell me something. Yeah, something, Rabiya ji. See, when you say there was an injury on her, this thing, like a kada head, this thing. What sort of a wound was that? Can you tell me? You see, the wound, there were 3-4 wounds. Yeah. I think you have a picture. If you can show the pictures to the audience, then they can see the. In case you have. Yeah. I don't. No. Why I'm asking you is that see. There was a deep injury of under the chin, and there was an oval-like circular imprint of like a watch. Yeah. Like not a circular, with watch. a diameter. Yeah. So, and then the ligature was going parallel hard. So a muslin dupatta will not create that belt like how Sushant had. Yeah. So this kind of injury. So the police officer saw the circular mark and the injury under. So he asked कि तुम्हारा कड़ा तो नहीं लगा. तो उसने बोला मैंने तो पैर पकड़ी थी, मेरा तो हाथ गया भी नहीं वहां तक. तो मैंने कहा ये सब बातें क्यों नहीं लिखी तुमने स्टेटमेंट में. So that statement then I took it to the High Court. पुलिस ने स्टेटमेंट लिखी हैं और मोइन बेग जो आई विटनेस था जिसने नॉट खोली थी, राइट, उसका तो स्टेटमेंट लिया भी नहीं था पुलिस ने. उसका स्टेटमेंट लिया नवंबर में. और वो कैसे पता चला कि पुलिस की चार्जशीट और जब एप्लीकेशन में, बेल एप्लीकेशन में सबके जब स्टेटमेंट डाले थे, मोइन बेग का तो स्टेटमेंट नहीं था. और उसका स्टेटमेंट लिया नवंबर 14 तारीख को और 2 स्टेटमेंट बना के, एक में 4 जून लिख दिया, एक में 14 नवंबर लिख दिया. और ये पुलिस की हेरा फेरी हमने पकड़ाई कि ये देखिए ये पुलिस का ये काम है. और अंजू मुझे कहती रही, मुन्नू मुझसे कहता है मेरा तो स्टेटमेंट ही नहीं लिया. यार मेरा तो स्टेटमेंट ही नहीं लिया, विच इज अ फैक्ट. उसका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिया था. तो कौन मैनेज कर रहा था क्राइम सीन, कौन मैनेज कर रहा था टू कवर ऑल द एविडेंसेस. किसने अलाउ किया था आदित्य पंचोली को मुन्नू के साथ और औरों के साथ मेरे घर में रात के 3 बजे दोबारा आने के लिए, दोबारा आना और क्राइम सीन के अंदर जाना. पुलिस ने तो क्राइम सीन को भी ढका नहीं. दे वेंट, तो दे शुड आस्क ना कि ट्रैक सूट कौन ले गया, वो क्या किस लिए आए थे, क्या ढूंढने आए थे. पुलिस ने तो सूरज पंचोली का फोन तक नहीं लिया था. बाप ने, अंजू महेंद्रू ने मुझे बताया
कि बाप जब हमको लेके जा रहा था, बाप उनको लेकर आया है क्राइम सीन पर। जब ला रहा था तो फौरन सूरत पंचोली को फ़ोन करता है, बेटा तू कहाँ है, तू जहाँ है तू अपना स्विच ऑफ कर दे फ़ोन, और जो भी कुछ है डिलीट कर दे। आप समझ रहे? बाप को कैसे मालूम था कि मैंने मुझे बेटे को फ़ोन करना है? हमने तो बोला भी नहीं क्या हुआ है। हमने तो कहा मैं तो जैसे चीख रही थी और बुला रही थी कि जल्दी आओ समथिंग हैज हैपेंड टू माय चाइल्ड। तो आप मुझे बताइए, उस बाप को कैसे मालूम है कि मैं अपने बेटे को फोन करूं? अगर उसको मालूम नहीं था कुछ भी तो he should have Yeah, told exactly, come exactly. there, come Yeah, to Rabia's house, something has happened to yeah, Jiah. yeah. Is it common sense or not? मैं कहती हूँ मीना जी, मैं Hmm. कॉमन क्वेश्चंस रेज कर रही हूँ जो मेरे कॉमन सेंस बात कर रहे हैं, और आप लोग भी कॉमन सेंस वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। Exactly. आप लोग इसीलिए जानना चाह रहे हैं। और ये धर्म की लड़ाई है, इस धर्म की लड़ाई में सबको खड़ा होना चाहिए। Yeah, absolutely. मैं कहती हूँ सबको खड़ा होना चाहिए। नहीं तो आपकी पूजा पाठ वगैरह, जब आप जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, अपने आप से पूछिए धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब सिर्फ ईसाई और मुसलमान से नहीं होता। धर्म का होता है सच्चाई का। Yeah. सच्चाई की लड़ाई है ये। और इतना लाड प्यार करता था अगर वो मेरी बेटी को, तो वो भी तो हमारा साथ देना कि हमें पता लगाना। पर कह रहे नहीं, पुलिस इज फाइन, पुलिस बिल्कुल ठीक है, पुलिस ने कर लिया है, सीबीआई ने कर लिया है। किसी ने इनको इतनी गलत फहमी और अश्योरेंस दे रखी है कि तुम लोग बस अब बेफिक्र हो जाओ। क्यों? Even Rabiya ji, see, when the son and the father came for the to your house, see, if you look at the video, you will see that the father is trying to control the media through his anger. What he's telling is that don't come near, don't touch, But why should they listen to him? Who is he? So that itself shows that he has something that the people are scared of. Yes. And नहीं, और लड़के की भी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। उसको फोर्स करके मुन्नू ने कहा मीडिया है तू जा, पुलिस ने कहा होगा भाई तुम जाओ। अगर पुलिस का इतना ही सुसाइड का था, मैडम जरीना वहाब को कहिए कि पुलिस ऑफिसर डोरजे जो उस रात को थे, उन्होंने कूपर हॉस्पिटल से मेरी बच्ची की बॉडी जे हॉस्पिटल में क्यों भेजी? खात्मा कूपर में ही हो जाना चाहिए था ना। आप समझ गए मेरी बात? Understood. तो अब मैं इस बात पर क्या कहूँ? इनकी तो बातें छोड़ दीजिए। मैं एक बात कहती हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट पर ध्यान देते हैं, पुलिस पर ध्यान देते हैं, और पुलिस को भी वो इतना डर जाते हैं छोटी सी तनख्वाह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए, प्रेजेंट गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए तो उनको तो करना ही पड़ता है वही, क्योंकि वो गवर्नमेंट के वो पब्लिक को सर्व करने के लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए। Who they are scared of, they will listen. Yes. तो ये खुमार की ये पुलिस, आप यू शुड ट्रस्ट देम एंड ये आपका करेगी नहीं, क्योंकि मुझे भी कहा गया था मीडिया को कहो कि पुलिस कार्रवाई करेगी, मीडिया को कहो कि पुलिस सब कर रही है। मुझे एग्जैक्टली यही कहा था, और यही बात उन्होंने जरीना वहाब को कही होगी, तो बार-बार बेचारी कह रही है। See, also, Rabiya ji, see, Disha had called police, when she went for the party. She called the police. The police never came. Because they all know what was happening. Everything is interconnected. मैं आपको बता रही हूँ मीना जी, पुलिस को भी मालूम है, सीबीआई को भी मालूम है, ये ट्रायल जज का हो रहा है। ये ट्रायल ना तो अक्यूज का हो रहा है। जा रहा है हॉलीडे, एक स्टैंप मार लेता है, हॉलीडे का भी वो परमिशन दे दो और चला जाता। जज, कितने जज बदले गए हैं इस केस में, उन जजेस से पूछ लीजिए। एक जज अगर पूरी तरह से केस पढ़ लेता है और अगर सही सवाल खड़ा करता है, उसको बदल देते हैं। और लॉयर्स का तो काम है डराना, विक्टिम्स को, विक्टिम फैमिली को डराना, कि वो डर के एक सवाल भी ना पूछे। मैं कई साल तक डरती रही। लॉयर मुझे कहते ये जज ऐसा है, पहले तो पूरी जज की एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, जज बहुत अच्छा है, ये जज प्रो विमेन है, ये जज खड़ूस है, ये जज है, ये यानी कि जैसे बाजार में सब खड़े हुए हैं। ये जज ये जज
इस तरह है ये जज। अब मैं क्या बताऊँ आपको, यू अंडरस्टैंड मी। और मैं कहती हूँ लेकिन ये एडवोकेट थे, ये काउंसलर थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, ये इन्होंने कितना अच्छी तरह से केस को पूरा रीड किया, ये लॉयर, ये एडवोकेट क्या कह रही है मैडम, ये तो 30 लाख रुपया लेता है एक अपीयरेंस का। अब आप बताइए, ये नीलामी है सब जगह, All on sale. अब 30 लाख रुपया कौन दे, 5 लाख रुपया कौन दे, 10 लाख रुपया कौन दे। इस तरह डरा डरा के हमको रगड़ रगड़ के केस को यही लोग खींचते हैं। और जब जिस दिन अच्छा जज हो रहा है, जिसने पढ़ा होता है, जैसे देयर वाज अ जज इन द कोर्ट, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने सवाल पूछा पुलिस से, ये पाई कैसे गई थी, तो उन्होंने कहा, ही सेड कि ये हाउ वाज शी हैंगिंग आफ्टर सीइंग द इंजरी पिक्चर्स, जो पुलिस की चार्जशीट में नहीं थी। तो पुलिस ऑफिसर उसको कहती है, प्रोसिक्यूटर को, कहो रोप थी, रोप। तो जज ने कहा कि इसको मर्डर की एंगल से देखिए, बिकॉज मेरे काउंसलर ने कहा नहीं, ये ऐसा मलमल का दुपट्टा था। तो इस तरह की हरकतें होती हैं, पूरा नौटंकी ड्रामा। तो जो जज पढ़ लेते हैं उस जज के सामने दोबारा नहीं जाएंगे। और अगर इत्तेफाकन डबल बेंच एंड सॉलिड जज इज देयर, तो इतनी हलचल मच जाती है, हाउ टू मैनेज। अक्यूज का बाप भी आएगा उस दिन कोर्ट में, सब होंगे वहां पर इंटिमिडेट करने। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, एक जज ने कहा, मैडम एक काम करो कि आप एक ग्रीवियंसेस बनाइए, डिस्क्रिपेंसीज, कि पुलिस ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और तुम क्या चाहते हो कि सीबीआई करे, एसआईटी करे, व्हाट डू यू वांट देम टू डू। हमने बनाई, हमने तैयार कर दिया। बिलीव मी, हमारे लॉयर ने बात ही नहीं की। वो तो जज अच्छे थे, जज ने पेपर्स ले लिए सारे और मिक्स्ड ऑर्डर दे दिया 2-3 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद। अब क्या बाद में क्या होता है, वो तो उनकी गवर्नमेंट जाने, उनका मुल्क जाने, उनका स्टेट जाने। फिर हमने जब देखा ये ऑर्डर है, फिर हमने उसके ऊपर फिर पिटीशन तैयार की, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए। तो इस तरह पिलर टू पोस्ट, सूरज पंचोली नहीं भागा, मैं भागी। I admire your patience, Rabiya ji. See, this is no joke. So many years of up and down, going up and down, मैं गई सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं गई। मैंने कई दफा लॉयर को कहा, मैं तो सारा केस अपना जानती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बोलने देते हो। जब आपका आदमी बोलता नहीं है तो मुझे बोलने दो ना। नहीं, दिस इज नॉट द रूल। आपको वो देखा नहीं है वहाँ पे वर्दी में पुलिस, वो आपको पकड़ के अरेस्ट कर लेगी। इतना डरा देते हैं, अब हर कदम पे डर, और डर के ऊपर आपका दर्द, और उस दर्द के ऊपर एक और दर्द। ये एक पहाड़ है आपके कृष्ण, मैं क्या कहूँ, कृष्ण जी ने तो हाथ पे पहाड़ उठा लिया था, मैं तो लेके घूमती हूँ। वही। और आंसू भी होते मेरे गले के अंदर। I know. Fighting for your daughter, like, it's terrible. जरीना कहती है मेरी बेटी जन्नत में, हाँ बेशक जन्नत में, क्योंकि मासूम थी, उसने प्यार किया था, हाँ किया था, लेकिन उसने ऐसा प्यार नहीं किया था कि सूली पे चढ़ जाए। अपने लड़के को देखो कितना कंट्रोलिंग है, कैसा है, क्या है। अगर आपने बचपन में थप्पड़ मारा होता, आपका बेटा शायद आज मंत्री बन गया होता। स्ट्रगल करने के। एनीवे, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। No, it's very important. See, it is very important, Rabiya ji, because our viewers have to know exactly what is happening, and it can happen to any other person. It can happen to any other girl. I mean, an innocent woman was murdered, so this has to come out. I'm sorry, Rabiya ji. I'm very sorry that, it brings out all your emotions. Ji, I have no animosity and nothing against
the accuser's mother, the family, or anyone. In fact, I can only say I feel sorry. I really feel sorry. No, we will get justice, I'm sure, Rabia ji. Don't lose hope. I hope, I hope, and I pray. I hope and I pray that, you know, that people evolve and they don't take away other people, other parents' Yeah, children. yeah, yeah. The biggest punishment could have been by दूर चले जाओ, मुल्क छोड़ दो, हमारी बच्ची जा रही है. अगर मैं और सीबीआई की आपको पढ़ूंगी तो ऐसा लगेगा आपको कि मैंने पूरी चार्जशीट पढ़ दी. So I don't want to, but trust me, what about the even abortion? I did not. CBI told me how Yeah. it happened, Hmm. and they were also. In fact, one of the officers said, "What a beastly act! Yeah, inhumane. Absolutely inhumane. What a beastly!" And and poor girl. Her, as he was afraid of his image, you think my daughter was not afraid? But my daughter definitely, if she has gone through this beating and violence, maybe she did not want to abort the baby. Yeah. Maybe she didn't want. Yes, exactly. Yes, I'm sorry. Rabia ji is very upset, and this is the first time that we've extended our session because, I mean, there's so much of sadness within her. So, thank you, Rabia ji. So, we'll have yet another session. I think I'll do the night because I'm very